नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हमारे साथ अभी मौजूद हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे टीबी श्रीनिवासन सर। आज यहाँ IIUM MUN के प्रोग्राम में GD गोविंद का स्कूल के साथ में जो इवेंट हो रहा है उसमें आए हुए हैं एज ए चीफ गेस्ट। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली में, बरेली लाइव चैनल की तरफ से। 60 years later. I was here 60 years ago. अब 60 साल बाद आना हुआ है, तो सर 60 साल पहले जब आए थे तब किस उसमें आए थे? I was a student या and I was given a scholarship to go to Nainital for a conference. ओके। And so I had a friend from Kerala here, so I came to visit him. It was very different. I can't even. क्या बात distinguish है, the place. 60 साल का बदलाव सर ने एक लाइन में बता दिया। सर, एक चीज़ ये है कि जैसे आप संयुक्त राष्ट्र में रहे, एक ने लंबे समय भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया, जो संयुक्त राष्ट्र आज का जो परिदृश्य है, क्या उसमें वो अपनी नीतियों में सफल मानेंगे आप? जो रूस और अमेरिका के जो गाजा और इजराइल में चल रहा है उसमें उसको लेकर के। No, the United Nations is facing a crisis. Yeah. There's nothing short of that. It's an existential crisis, whether it can last beyond 80 years. 80 years is a pretty old age to, to prove or disprove. So the fact that the United Nations is facing a crisis is nothing new, because the world changes and you have to reinvent. And that is what the IIM-UN is doing. It is not United Nations anymore. We have to unite the nations. And that is the message that this conference gives. So we need to renew, we need to reinvent, and we need to find a new formula for world peace. सर, दूसरी एक चीज़, जो यूनाइटेड नेशन जैसे अपना तक क्राइसिस फेस कर रहा है, रिफॉर्म ज़रूरी है उसके लिए। दूसरा क्या है कि आतंकवाद को लेकर के जो भारत फेस कर रहा है और यूनाइटेड नेशन का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, वो क्या दोहरा मानदंड नहीं अपना रहा है? आप एज ए जो आपका एज ए डिप्लोमेट क्या? No, the problem is the United Nations or the international community as a whole is not a welfare organization. ओके। It is not even a judicial organization where, equality, social security, none of that. It is a place where everyone is looking for its own place in the world. So it cannot be done by merely using force or in any case changing the structures. So you need to have a change of mind, a change of heart. And that is developing, and now that contribution is coming from India rather than anybody else. Nobody else in the world is speaking of peace as we do. एज मच आतंकवाद को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो वो ठीक बात है कि ऐसे नहीं बदला, तो वो कैसे बदला जाए? आतंकवाद को कैसे कैसे ख़त्म होगा देश से, दुनिया से? No, the argument is गाजा एंड इजराइल एक लाइव एग्जाम्पल है इस Yes, absolutely. But one man's freedom fighter is another man's terrorist. राइट। This is the problem. We consider the movements in Kashmir Yeah. to be terrorists या because we know that they are being unfair. They are trying to secure something which they cannot get by other means. But for themselves and their supporters, they are fighting a struggle for freedom. That is why even today there is no definition of terrorism in the UN. We ourselves have supported terrorism in certain sense. Sri Lanka, Tigers, we supported. So they look at us and say, what did you do in Sri Lanka? We say it was a freedom fighter. Or Palestinians are freedom fighters. They are not terrorists. So as long as this distinction remains, there will be no understanding on terrorism. So what we think is a fight against terrorism, some people see it as a fight for their rights. So what kind of reforms should be in United Nations in context to India? No, most important priority should be to expand the Security Council. Okay. It is 80 years old, Yeah. and the realities of today are not the realities of 80 years ago. So that should be reflected. Where is Germany? Where is Japan? And India also? Well, I know, I'm saying even Germany and Japan, Yeah. because they lost the war, Yeah. they have been put in a corner. But today, the world is supported by Germany and Japan. Germany and Japan pay more to the UN than the United States. So how do they represent? How do we bring them into the system? And that is the challenge, the reform. थैंक यू। देखिए, यूनाइटेड नेशन के सामने एक चैलेंज है कि वो एक 80 साल पुरानी संस्था हो गई है, उसमें रिफॉर्म ज़रूरी है और हम उम्मीद करेंगे ये रिफॉर्म जल्दी से जल्दी हो और भारत को भी एक स्थायी सीट UNSC में मिले।
इसी उम्मीद के साथ आप देखते रहिए बरेली लाइव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेरी मच। Thank you very much.